या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञाय जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। सम्प्रति भ्वादिगणस्य विद्यमाने धातुभ्यः धातूनां रूपाणि निर्मापयितुं वयं प्रयतामहे। एतावत्पर्यन्तं मया गृहकार्यं दत्तमासीत्। कदाचित् 10 वा 12 वा धातवः आसन्। एतावत्पर्यन्तं द्वित्रः जनाः एव गृहकार्यं कृत्वा प्रेषितवन्तः। परन्तु अद्य वयं तेषु केचित् धातुं स्वीकृत्य अध्ययनं कुर्मः। तर्हि आदौ अस्माभिः किं करणीयं? सोपानानि कथं भवेत्? So what are the steps what we follow? So we will take each and every dhatu and we will gradually try forming the rupani. So the first dhatu which was given was shuch. Okay, shuch. I will also take out the dhatu part. Just a moment. सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? महोदय दृश्यते। अस्तु, तर्हि शुच इति मूलरूपमासीत्। So we will focus on this shucha iti. Shucha santape अथवा शोके इति तस्य अर्थः. So what is the first karyam that we need to do here? प्रथमं कार्यं किं भवेत्? गणस्य भवादिगणस्य एव धातवः सन्ति, सर्वे धातवः। धातुसंज्ञा। हाँ, तर्हि आदौ धातुसंज्ञा करणीया। तर्हि वदतु केन सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति? भुवादयो धातवः। अस्तु, भुवादयो धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा अभवत्। इदानीं किं कर्तव्यं वदतु? इत्संज्ञा। यदा इत्संज्ञा प्राप्नोति चेत् इत्संज्ञा करणीया। अस्मिन् का इत्संज्ञा भवेत्?
उपदेशे जनुना शुच् शुच् इत्यस्य उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण अनुस्वार अकारस्य इत्संज्ञा भवति, शुच् अवशिष्यते। उत्तमम्। शुच्। इदानीं लकारस्य योजनं। तस्मिन् लकारे भवतां विवक्षा अस्ति वर्तमाने लट् प्रथमं तत्। अस्तु, शुच् प्लस् लट्, वर्तमाने लट्। इत्यस्मिन्नपि लट् इत्यस्य इत्संज्ञा भवति। तत्रापि लट् लकारस्य उपरि चन्द्रबिन्दुः। वर्तमाने लट् उपदेशे जनुनासिक इत्युक्ते हलन्त्यं संज्ञा प्राप्नोति, लकारः सूत्रेण लोपः भवति। अवशिष्यते। आमां टकार केन सूत्रेण गच्छति महोदय? टकार हलन्त्यं हलन्त्यम् इति सूत्रेण गच्छति। अनुनासिक अकार उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन इत्संज्ञा प्राप्नोति। तर्हि शुच् अधिकं लकार एव अवशिष्यते। इदानीं लकारस्य स्थाने तिप्तज्जिः आदेशाः भवन्ति। इदानीं प्रथमपुरुष एकवचने मम विवक्षा अस्ति। आदौ वयं तस्मिदेव वयम् आरभामहे। तर्हि शुच् प्लस् तिप्, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् अतने तिप् इति आगच्छति। यतोहि अयं धातुः ङित् नास्ति, ङित् नास्ति, स्वरित् अपि नास्ति, अनुदात्त अपि नास्ति। उदात्त धातु, तर्हि उदात्त स्वरस्य इत्संज्ञा जाता। अनेन शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदी प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति। इदानीं वदतु अग्रे। तिप् पकारस्य संज्ञा भवति हलन्त्यम्। अस्तु। विकर्ण तिङ्क्षित् सार्वधातुकं शप् प्रत्यययोजनं भवति। कर्तरि शप्, कर्तर्यं कर्तुम् इच्छामि महोदय। तर्हि विवक्षा का लेखितव्यं खलु? कर्तरि शप् तिङ्क्षित् सार्वधातुकं सूत्रम् आगच्छति, अनन्तरं कर्तरि शप्। अत्र केशात् कर्तरि परस्मैपदं, परन्तु कर्मणि भावे च अकर्मकेभ्यः आत्मनेपदी प्रत्ययाः भवन्ति। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। So this is the complete sutram or the anuvatri sahitam. कर्मणि भावे च अकर्मकेभ्यः आत्मनेपदी प्रत्ययः भवति and शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्. Okay, so we have to decide whether it is a karmani or kartari prayoga or a bhave prayoga. So if it is not a karmani, if it is not a bhave, then it is kartari. So that is why we have used ti. Now idanim किं भवति? विकरण प्रत्यय शप् इति विकरण प्रत्ययस्य इत्संज्ञा करणीयं महोदय। आदौ योजनं केन सूत्रेण भवति?
विकरण प्रत्ययस्य योजनं केन सूत्रेण भवति? कर्तरि शप् महोदय। कर्तरि शप् कर्तरि शप् इत्यनेन एकं निमिषम्, अत्र गच्छति। कर्तरि शप् इत्यनेन शपः स्थापनं। पुनः शपः इत्यस्यापि संज्ञा जाता। हलन्त्यम् इति सूत्रेण पकारस्य संज्ञा प्राप्नोति। अनन्तरं तर्हि इदानीम् अकार एव अवशिष्यते। तर्हि कीदृशः अयं प्रत्ययः? How do we identify this pratyaya? Shapa, what type of pratyaya is there? सार्वधातुक प्रत्ययः। कर्तरि शप्। हाँ, कर्तरि शप् इत्यनेन शपः आगमनं भवति, परन्तु शप कीदृशः प्रत्ययः इत्युक्ते यतोहि षित् तालव्य शकारस्य संज्ञा भवति, अनेन षित् अस्ति। षित् अस्ति इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञकः अस्ति। पुनश्च पकारस्य संज्ञा भवत्, अनेन पित् अस्ति। तर्हि सार्वधातुक पित् प्रत्ययः। तो सार्वधातुक प्रक्रियां वयं यदा वयं कार्यं कुर्मः किमपि, तर्हि पित् तथा अपित् प्रत्ययः अस्माभिः ज्ञातव्यः। दिस् इस् पित् प्रत्ययः। इदानीम् एकं कार्यं भवति, किं भवेत्? सार्वधातुक आर्धधातुक। नो, बिफोर दैट शुच् का उकार जो है ना, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बोल रहे हैं। शुच् तो उपदेश अवस्था में अस्ति खलु। अंग कार्यं होते ना। हाँ, अंगस्य सूत्रं किम्? यावत् पर्यन्तम् अंग यस्मात् प्रत्यय विधिसति तदा प्रत्ययः। हाँ, तर्हि आदौ अंगस्य निर्माणम्। So if you yavat light we have denoted a dhatu sanya, then we can start our prakriya. So now this is a anga. Yavat parentam anga sanya na kriyate, tavat parentam anga karyam api na bhavati. So shuch plus a plus ti yasmat प्रत्यय विधीयते विधिस् तत् प्रत्ययम् तदादि तत् आदि प्रत्ययम् यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम. Okay, so by this it will give the shuch as a anga of which pratyaya? Shucha is a anga of which pratyaya? विकरण प्रत्यय। एक बार शप् प्रत्ययम्। शप् प्रत्यय। तत्र अकारः इति विद्यमानः अस्ति, शप् प्रत्ययस्य एव अंग अस्ति। Okay, you cannot say that it is anga for tip pratyaya. Shucha is a anga only for the shap pratyaya. So now what is the karyam happening here? So this is a sarvadhatuk pratyaya we had identified. आर्धधातुकयोः then इगन्त अङ्गस्य गुणवृद्धि भवति। अत्र इगन्त अङ्ग अस्ति वा? शुच कीदृशः धातुः? तर्हि हलन्त धातुः अस्ति। तर्हि हलन्त धातुः सति किं वयं कर्तव्यम्? अस्माभिः किं कर्तव्यम्? लघुपदस्य उपधा द्रष्टव्या। उपधा द्रष्टव्या। तर्हि उपधायां किम् अस्ति? लघुइक अस्ति वा? लघुइक अस्ति खलु? ओके, लेट् अस् लघुइक अस्ति न वा इति पश्यतु। लघुइक अस्ति, तर्हि किं सूत्रम् आगच्छति? पुगन्त लघुपदस्य किं कार्यं करोति? पुगन्त लघुपदस्य कस्य गुण करोति?
लघु पदयाम दीर्घम तुच्छ सोच उगा गुणा भवति दीर्घम शो नो मैथिली भगिनी नो दीर्घम तुच्छ शुच् सोच इति अस्ति ह्रस्व उकार अस्ति लघु इक वर्ण अस्ति तस्य गुणादेशः करोति सो उकारस्य स्थाने ओकारः भवति ओकार दिस इज शोचति नॉट अ दीर्घ सो शोच प्लस अ प्लस ति एतावत्पर्यन्तम् अवगम्यते वा आम् नौ वर्णमेलनम् एतस्मिन् शङ्का अस्ति वा एतावत्पर्यन्तम् न तीतः अन्ति इदानीम् अन्ति शोच इति अङ्गम् अभवत् अदन्त अङ्गस्य निर्माणम् अभवत् शोच कीदृश अङ्ग शोच अदन्तस्य कृते सार्वधातुक प्रत्यय अदन्त अङ्गम् इत्यस्य निर्माणं भवति इदानीम् अकारः अस्ति खलु तस्मादनन्तरम् अन्ति इति प्रत्ययं स्वीकुर्मः अन्ति इति कीदृशः प्रत्ययः झुन् अजादि पर्यन्तम् अजादि अजादि अजन्तम् नो नो न, न, न। अजादि अजादि पित् और अपित् अपित्। और अपित् 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 अजादि अपित् प्रत्यय हाँ अजादि अपित् अपित्। प्रत्यय सो अन्ति इज अजादि अपित् प्रत्यय हाँ ओके शोच plus anti. Why I told apit pratyaya to identify apit pratyaya? Because if it is been a pratyaya, then it will again force an angakaryam, like gunakaryam. Because tip is a pit pratyaya. So tip is a pit pratyaya. But ti, taha, anti. Taha and anti are apit pratyayas. So this will not force a gunakaryam. गुणनिषेध भवति सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेण ङित्वत् अस्माभिः कृतम् आदौ अनेन किङति च इति सूत्रेण गुणवृद्धेः निषेधः सो शोच अधिकम् अन्ति अजादि अपित् प्रत्ययः इदानीं किं भवति पररूपं भवति न शोचन्ति डोंट आस्क मी यू टेल मी व्हाट हैपेंस हाँ अकार और अकार का एक सिंगल आकार रहता सूत्र है बताइए सूत्र बताइए हाँ सूत्र अतो गुणे पररूप अतो गुणे इति सूत्रेण हाँ अतो गुणे अतो गुणे हाँ अतो गुणे एतावत्पर्यन्तं सर्वे अवगच्छन्ति वा आम् आम् महोदय अस्तु तर्हि वयम् इदानीं लोट् लकारस्य प्रत्ययान् कुर्मः लोट् लकारस्य लोट् लकारस्य प्रत्ययः वदन्तु कोऽपि तु तामन्तु शून्यता तं तो अनि आवाम तु तात् ताम् अन्तु अंतु शून्यता शून्यता तन्त तं अनि तो अनि आव आवाम तो तात और तु लेट अस स्टार्ट विथ तु तु कीदृशः प्रत्ययः पित् और अपित् पित् एंड तात तात अपित् कथम अपित् अभवत् अंतिम हल उसको अपित क्यों किया तू तो है अपित है उसी के स्थान पर तात भी आता है तो तात को अपित क्यों रखा अच्छा अच्छा वो भी पित है अच्छा नहीं पित नहीं है वो पित पित नहीं है I think there was something I read somewhere. हाँ तो सूत्र याद करिए तो ह्यो तातंग आशीषी अन्य परिस्थियाम तातंग है तो नकार है तो गीत है बोल करके आपको इसमें गुणवृद्धि नहीं हो सकती अपित है गीत है बोल करके गीतवत है तो गुणवृद्धि किंगति च सूत्र से निषेध तो अपित अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो भूल मत जाइए इतनी जल्दी जल्दी If I give you 1 week time, you will forget everything. So, tu is a pit pratyaya because
ती को एरु सूत्र से तू किया हम लोगों ने. सो तू इज अ पित प्रत्यय, बट तात इज एन अपित प्रत्यय. तो अब आप इसमें ऐड करिए शोच, सोचतु शोचतु एंड सोचता शोचतात तात, और ताद भी बनता है. ताद वावसाने ताद और जस्त से तात भी बनता है. ठीक है. हाँ शोचतु, शोचतात, और बाद में सोचता शोचताम, तू शोचंतु ताताम, अंतु. अंतु अंतु सिमिलरली इसी के वजह जैसे अंति किया ऐसे अंतु होगा शोचंतु. हाँ और शून्यतात्तम तो शोच में शून्य है. कौन सा सूत्र से शून्य हुआ? हम्म, सो सेच Serya pitch and हाँ authority. सेरे पिक्चर सेरिय पिच से क्या हुआ? से इसी को ही आदेश हुआ. से को ही अब ही को लोप कैसे हुआ? Ato he. अतो हाँ तो हे है सूत्र से लोप. याद रखिए, बहुत उत्तम मीना जी. अतो हे सूत्र से लोप. सो शोच तथैव तिष्ठति, देन शोचतादपि भवति. नाउ आनि आव आम वदतु. शोचानी Shochani. Shochavo. Shochamo. कौन सा सूत्र लगेगा? अनुस्वार नहीं यही मेरनी मेर एक मेरनी आदित्य पिच. नहीं, मैंने आनी रेडीमेड कर दिया. हम लोग मेरनी सूत्र नहीं कर रहे, आड उत्तम से पिच नहीं, हम लोग ने रेडीमेड प्रत्यय लगा दिया आनी. सवर्ण दीर्घ संधि अतो दीर्घ यही अथो अक सवर्णे दीर्घः. सवर्ण दीर्घ संधि अक सवर्णे दीर्घः. अक सवर्णे दीर्घ. इधर अक्का सवर्ण रहेगा शोचावो में अतो अतो दीर्घो यही व और म वाला प्रत्यय में आता हाँ है. वो में तो में यही आएगा आपने बोला ना. शोचामो हाँ, वकारादि यकारादि प्रत्यय. बराबर यही हाँ, शोचानी शोचावह. अब शोचावह आएगा. ठीक है. सोचाव अब लंग लकार. तोतम तम अन तामन ततमन. सतम त म अम्बम अम्वम चलिए बताइए. शोच है, उसके बाद में क्या होगा? और उत्तम पिक्चर हाँ पहले आठ आड उत्तम से पीछे किस में आता है? वो प्रत्यय में आता है, और ये अंग कार्य है. आद टिकिट आद्यन हाँ हाँ हाँ. लंग लंग लुंग हाँ, उससे अकार का आगम. अशोच. असोच तो ये हम लोग का अंग बन गया. ठीक है. अशोच अंग बन गया. अब उसके साथ में आप और बताइए. तो तामन अशोचत, अशोचताम, अशोचन. अशोचः कैसे बना? असोच ये कैसे आया? सेरिया पिच फिर सेरिय पिच किस में आया? सूर्य पिच आपको किस में आता है? लोट में. लोट में आएगा. करवसानयो विसर्जनीयस्य सः. हाँ, तो ससजुषोनुः करवसानयो विसर्जनीयस्य सः. हम लोग का प्रत्यय क्या था? ततामन सतम त सकार था. तो अशोचस ये रूप था. उसके बाद में असोचस का असोचर और असोचः. करावसानयो विसर्जनीय. समझ में आ रहा है सबको?
आं महोदय अशोचः अशोचः अशोचताम् अशोचतम् अशोच अशोच अशोचन अशोचः अशोचताम् अशोचन और अशोचत अब उत्तम पुरुष में अशोचम अशोचम अशोचावो अशोचामो फिर से बोलिए, अशोचम क्यों आया? अतो गुणे सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ? अतो गुणे महोदय हाँ, अतो सवर्ण गुणे दीर्घ क्यों नहीं लगा? यही यही नहीं है। नहीं, अतो सवर्ण गुणे दीर्घ क्यों नहीं महोदय लगा? अते गुण अतो गुणे अतो गुणे, तो अतो गुणे का प्रसक्ति है यहाँ पर, तो सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा। यहाँ पर अकार है, ह्रस्व आकार, उसके बाद में पुनः एक अकार आता है। सो अपदांत आकार के बाद में कोई भी गुण वर्ण आता है। गुण वर्ण कौन से हुए? अ, ए और ओ। अपदांत आकार के बाद में कोई भी गुण वर्ण आता है तो दोनों के बीच में पररूप एकादेश होगा। पररूप एकादेश भवति। अशोच and a will combine to form another a. Ashocham. Then ashochavah, ashocam. Ashochav, ashocam. अशोचव अशोचाव अशोचम म फिर से क्या है? यही प्रत्याहार है, ययादि प्रत्यय है, तो उसके नित्यम गीतक वो ठीक है। हम लोग प्रत्यय भूल गए, अभी रेडीमेड प्रत्यय है हमारे पास में। तो अतो दीर्घो यही, दो दीर्घ तो दीर्घो यही। महोदय, अत्र लोट लकारे शोचा व आएगा ना, और विसर्ग नहीं आएगा। शोचा व शोचाम शोचानी शोचाव। शोचाव, हाँ ठीक है। करवानी करवाम करवा। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं टाइपिंग ठीक है। और विधिलिंग विधिलिंग इताम इहु इहि इतम इत इताम इयु इतिताम इयुः इताम इयुः इहि इहि इदम इत इद इयम् इव इमः इव इम शोच इत। अब बताइए क्या होगा? शोचेत। गुणवृद्धि वो तो सबको मालूम है, लेकिन उसको बताइए कैसे हुआ? गुणवृद्धि भवति। आद गुण, गुणवृद्धि नहीं, आद गुण से गुण हुआ। आद गुण आद गुण से गुण संधि हुई। च और ये चे। क्यों है? अवर्ण है, उसके बाद में इक वर्ण है, ठीक है, तो गुण संधि। आद गुण का अर्थ क्या है? नहीं समझा। आद गुण वो सूत्र है जिससे गुण संधि होती है। हाँ, गुण संधि गुणवृद्धि सूत्र महोदय। नो, इको गुण वृद्धि is on means whatever happen guna and vruddhi is always happen to the ik varna, whether it is a guna or vruddhi. Okay. It happens only to the ik varna and not anything else. If nothing is stated, then ik varna always get the guna or vruddhi adesha. That is why we find that igantasya angasya guna bhavati. How do we come to know igantasya angasya eva guna bhavati? इको गुण Adeng guna states which are the varnas to take. At and eng pratyahara. A, o are the varnas, guna varnas. But ad guna is panchami of akara. Avarnat pare. यदा कोपि अच वर्ण अथवा तो इक वर्ण आगच्छति चेत गुणादेश गुण संधि भवति। अ के बाद में ई उ रिल ऋ आने से गुण संधि भवति। अभी तो गुण संधि मैंने अभी खत्म किए, फिर आप लोग सब भूल गए। नहीं, अदें गुण संज्ञा सूत्र, आद गुण वो विधि प्रक्रिया सूत्र, विधि सूत्र है। विधि सूत्र, हाँ।
इसमें शोचेत भी है और शोचेद भी होगा, ठीक है। वावस खरोसाने आपको है तो झलाम जशो अंत से जस्तो भी होगा और वसाने से चरतो भी होगा, तो दो इसकी फॉर्म आएंगे। वाई स्टार्ट कंपेनियन अभी नहीं, ओके। सो एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? शोचेत् आम् ईत इयम इव मिय इव इम। तो now we'll set the em shocha plus क्या होगा? शोचेयम शोचेयम शोचे कथम आद्गुण कथम आद्गुण तभी आद आग गुण से, हम्म, आद गुण से अकार और इकार की गुण संधि हुई। So always keep this in mind where the guna sandhi is happening and when gunadesha is happening. Okay. So when we are replacing puganta laghu padasya and igantasya angasya, we are doing a gunadesha. There is no guna sandhi here. We are just replacing a particular varna with a guna varna, which is called gunadesha. The guna sandhi happens if an avarna is followed by any ikvarna. ओके For that, ikvarna is the nimittam. And for in the previous case, igantasya angasya eva guna vruddhi bhavati. एक स्थाने न एकस्थाने गुण अथवा वृद्धि भवति। एको गुण वृद्धि इति सूत्रम्। यहाँ पर सबको एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नोति वा? तो स्थानी को पर निमित्तम भी बोल सकते हैं ना, वो न परनिमित्तम नहीं पूर्व पंचमी निमित्तम, सॉरी पूर्व पंचमी निमित्तम। जिनके स्थान में पूर्व निमित्तम होगा पंचमी अच्छा और स्थान पर निमित्तम होगा पंचमी और सप्तमी और से पूर्व निमित्तम, उसके पूर्व में काम होगा और पंचमी से बाद में काम होगा। हाँ, तो स्थानी को पूर्व निमित्तम बोल सकते हैं। हाँ, तो आप षष्ठी साथ आपको षष्ठी विभक्ति ही आपको डिसाइड कर देगी। यदि षष्ठी नहीं दिखेगी तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें पंचमी लगी है या सप्तमी लगी है। और पंचमी से क्या होगा? पंचमी के बाद में आद गुण, जैसे मैंने आपको बनाया, उसमें षष्ठी नहीं है तो आद और गुण। तो आद के बाद में, आद मतलब अवर्ण के बाद में गुण वर्ण है। गुण वर्ण मतलब इसमें तो उसमें गुण है और इक की अनुवृत्ति आती है। तो इक, तो आद के बाद में यदि इक वर्ण होता है तो गुण आदेश होता है, तो गुण इज द प्रथमा विभक्ति। सो अवर्णात् परे यदा इक वर्ण आगच्छति चेत् गुणः भवति इति सूत्रस्य आशयः। Understood the shoch dhatu? How do we proceed the prakriya? Now can anyone try with another one? Yes, Mahodaya. Shall I try? This is the G Jaye. We have already done that, so I'm not taking this. Okay, Vrut. Does anyone remember G Jaye? Vartate, I think. No, G Jaye. G Jaye. I've already explained in the class, so I'm not taking it here. So we'll do the Vrut. Vrutu is the Rupam. रुकार Atmanepadi, Mahodaya. Vrut. So it is actually रुक एक निमिषम। तो
हाँ, वर्तने वृतो वर्तने. Imagine as Chandrabindu because I cannot type both at the same time. ओके ओके Okay. ओके महोदय अस्तु. अनुनासिक More important is what is the swara I have marked here. अनुदात अनुदात Anudatta. अनुदात So what does anudatta indicate? अंडरलाइन अनुदात स्वर अनुदात्त आत्मनेपदम् आत्मनेपदम् आत्मनेपदम्. अनितेनिमित्त आत्मने. So मुतु वर्तने इति धातोः अर्थः. Vartate is like asti. So this is a vrutu vartane atmanepadi asti chet vayam ज्ञातुं शक्नुमः. केन सूत्रेण आत्मनेपदी प्रत्ययः प्राप्नोति? अनुदात्तङ्कित अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम्. So I am doing the dhatu sangya is done, okay, and we have also done the it sangya. So vrut is left, but what type of pratyaya it will get? Anudattangita atmanepadi. आत्मनेपदी तो आत्मनेपदी प्रत्ययः. इदानीं वृत्त. तो शप् No, न don't. शब्द पहले तो न First is the lakara. Lot, lut, lung, vidiling. So lut, vartamane lut. वर्तमाने लट् Vrutu plus lut, vartamane lut. Okay. So tatra punaha lut ityasmin उपदेशनासिकयुक्त हलन्त्यम् लोपः. लकार तस्य स्थाने तिप्तझि आदेशः भवति. वृत्त प्लस तो त महोदय आत्मनेपदम. Okay. वृत्त प्लस त. So we will say tita atmanepadanam tere. Will use ready-made pratyaya. So we'll directly use te. सब Now we have pratyaya as ting pratyaya as well as our dhatu to be used. Now what to do? कर्तरि शप् कर्तरि शप् कर्तरि शप् Kartari shab. कर्तरि प्रयोग शप् कीदृशः अयं प्रत्ययः? चित् सार्वधातुक प्रत्यय. वृत्त प्लस अ प्लस ते. वृत्त प्लस ए प्लस अ प्लस ते. इदानीम् अकारः दृश्यते. कीदृशः अयं प्रत्ययः? सार्वधातुक नहीं, आप अभी फोकस करिए सिर्फ अकार पर. कंद लघुबद्धस्य नहीं, अभी मैंने क्या पूछा नहीं. अकार कैसा प्रत्यय है? पित्त सार्वधातुक पित्त प्रत्ययः. Unless and until we define whether it is sarvadhatuk and ardhadhatuk, we cannot proceed with the sarvadhatuk, ardhadhatukayoho and pugandalagubadasya cha. So both sutras will not be applied unless and until we identify the pratyaya, which lakar to use, and what prakriya to go. Okay, we have to first identify which is the type of pratyayas, and then we will do the gun angakaryam or the gunakaryam accordingly. It can be vruddhi karyam, it can be gunakaryam. Now it is a anga. Which is the anga sangya sutram? anga sangya. यस्मात् वृत्त प्लस अ प्लस ते. यस्मात् प्रत्यय
ठीक है. विधिरस्ति तदादि प्रत्ययेन I just want to know whether my students know or not. Okay. Yasmat pratyayavadis tadadi pratyayangam. Now, what is the first thing you look? Whether the anga we are giving the this is an anga karyam. अलन्त्य धातु महोदय Halant dhatu asti angam. No, we will not longer say it is a dhatu. It is an angam now. So angam is halantam so far. हलन् So what do we have to see in the halantya उपधा उपधा we have to upadha see. drashtavya. Tari upadhayam kim asti? ऋकार ऋकार ह्रस्वैक वर्ण अस्ति वा? यस् यस् महोदय ह्रस्व अस्ति. तर्हि किं भवितव्यं? केन सूत्रेण? पुगन्धलघुपदस्य इति सूत्रेण पुगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण ऋकारस्य अर् आदेशः. वर् प्लस् अ प्लस् वर्त महोदय इत् महोदय आमामाम्. वर्त वर् प्लस् अ प्लस् ते. ओके. पुगन्तलघुपदस्य. इदानीम् आदौ अग्रे जस्ट् वर्णमेलनमेव वर्तते. वर्तते सो आत्मनेपदी प्रत्ययः वदन्तु कोऽपि. तो आताम ते इते अन्ते से ते इते द्वे इते अन्ते ते इते द्वे ये वहे let us start with the original ting pratyayas. Okay. Atmanepadi ting pratyayas. ते इते अन्ते Original ting pratyayas मूल प्रत्ययः तातां झ था तातां ध्वम् हित वहि महि. And lat lakare तस्य लडादेशः किम् अभवत्? लडादेशः किम् अभवत्? आतां झ इत्यस्य किम् अभवत्? ते इते अन्ते ते इते द्वे हे वहे महे. When I say लडादेश, लट् लकारे एतेषां प्रत्ययानां कः आदेशः अभवत्? It can be लडादेशः, लोडादेशः, लङ्गादेशः, because the pratyaya is same. Tiptachi, siptastas, mipvasmas, tatam, jha, tha, tatam, dhvam, it, vai, mai. We have 18 pratyayas which tend to be used in all 10 lakaras. So how do we identify this particular lakara? This form of lakaras have to be used in that particular, this sort of pratyayas to use in that particular lakara. So that adeshas have been done, which we have learned, pratyadesha. So lat lakarasya ye adeshah bhavat. This is लडादेशः इति नाम्ना उच्यते. लडादेश लट् आदेशः लडादेशः. जष्ट्वा वर्तते ते इते अन्ते ते इते द्वे ए वहे महे. इदानीं वर्त एन् इते कैसे? विच सूत्रम? वर्तेते. इदानीं वर्त अन्ते सूत्रम अतो गुणे. उत्तमम्. वर्ते वर्ते अतो गुणे. What you are doing is you are finding out what is the final rupa and that's coming back. You are back calculating. I don't require back calculation. I require to go forward with this calculation and arrive at the final rupam. We know varte, vartete, but so varte, then you have to rupam that you back calculate. This is ato gune or savarna dirgha sandhi. You go according to what Panini wants to say and then arrive at the final rupam. In that case, you will never make any mistake.
महोदय अकार एकार. यस अतो अतो So this is a guna varna. अतो So ato gune ityanena वर्त pararupa adesha. वर्तते वर्तते Varte. वर्ते Varte. वर्ते E vahe mahe. Idanim vahe mahe. We'll take same together. Vahe and mahe. What will be the rupam? वर्तामहे वर्तावहे अतो वर्तावहे दीर्घ ययि वर्ताम Ato dirgho ययि. yai. Kim karoti idam sutram? अकारस्य अकारम् आकारं भवति Katham sutram. Ato dirgho यही ato यही प्रत्याहार ययि प्रत्याहार परे यही प्रत्याहार नहीं बोलते हैं. प्रत्यय यही हाँ, यही प्रत्यय. ययादि प्रत्यय. ययादि प्रत्यय याद प्रत्यय परे जिसके प्रत्यय के आगे में ययादि वर्ण है. ययादि प्रत्यय. स्टार्ट द ययादि. व्हाट आर द यही प्रत्याहार? यही प्रत्याहार. वरल न्यमांगणन पंचम चतुर्थ तृतीय कप्पाई पर्यंत. No, Kap- no. Ja- So see, everywhere ja- here you are getting bowled out. This is not a ya. जबं This is Ja- ya. ज्ञानम This is not ya. This is not a ya pratyaya, but जभई पर्यंतम. जबै 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 वरल न्यमांगणन झभ bas. That's all. जब You don't take to अंतस्था kapaya. आणि This is चतुर्थ. the mistake that all people do. yes You are not the only person. So that is why I have again revised it. What is the yai means? या बघा. so It's not a only yaya, the plus अंधस्था जबै यकार छोड़कर अंधस्था छोड़ के अंधस्था यकार नहीं है. यकार तो आएगा ही. हा छोड़ हकार हा छोड़कर. विहाय अविहाय विहाय, अंतस्थः हा विहाय. वर्ग पंचमः एंड चतुर्थ. छपाई. चतुर्थः हाँ, चतुर्थ का नाम चतुर्थ नहीं है. चतुर्थ सब पूर्ति चतुर्थ ना. नहीं है. झ और भ है. only धड़दश two नहीं है. two अक्षर वर्ण So basically we come across only yakar adi and makar adi pratyaya and vakar adi. Vakar adi, makar adi. सुबन्धम in ba will come महोदय Huh? Jha will come and Yeah. nya is the ending. So all fourth varnas will not come. That's Jha anubandha, no? ghadadha will not come. that's Okay. So it will be basically it will means yakaradi, makaradi and vakaradi pratyayas. And we don't find yakaradi pratyayas except from yak pratyaya. So this is basically meant for in the tiganta pratyaya, tiganta, all vakaradi and makaradi. We have to keep it in mind. So as and when we see yakaradi and vakaradi, vakaradi, makaradi pratyaya, ato dirgho yai. जी ह्रस्व अदंत मतलब अदंतस्य अंगस्य दीर्घादेशः करोति. अतो दीर्घो यई. यई प्रत्यय परे. So this is the यई प्रत्यय, not a यय प्रत्यय. Okay? This is the यई. ओके. No. So we will have a dirgha of akara will making a varta. Vartavahe, vartamahe. It is not avahe and amahe, but vartavahe and vartamahe. The changing happening in the angam karya and not the pratyaya. But in the ani, ava, ama, in the lot lakara, the akara was coming before the pratyaya itself and not the anga. Okay? So ad uttamasya picha, it was coming uttam purushasya pratyayanam adav. Vartavahe, martavahe. इदानीं वदतु लोट् लकारे. लोट लकारे तुता ना तू ना लोता लोट् लकारे आत्मनेपदी ना आणि आवाम ताम इताम अन्ताम
तो त्वन्तां तो इतामन्त था I इथाम think I द्वम् think द्वैतं द्वम् I have इव to निमन् share the न न न न न न न न no न need महोदय no need I no न need need न to न share न the न न न pratyas. न Everyone share मत follow. करो ताम इतामन्तां स्वो इथाम लोट लोट ताम न इताम महोदय तामिता sharing का आवश्यकता नास्ति स्वो sharing इथाम द्वम् ऐ आवहे I आमहे avahai amahai. तामितां So मन्तां whatever I have marked in red are pit pratyas. These are forced pit pratyas. Ad uttamasya pitcha. Otherwise, we have only have a mip as a pit pratyaya, which is a pit pratyaya. Okay. In this case, lot lakarasya sarve uttam purushasya pratyayah pit bhavanti iti atideshah kritah. By which sutram? Ad uttamasya pitcha. Ani ava amah ai avahai amahai. Okay. So vartavahe martamahe. Now tam itam antam स्वो इथाम varta plus tam. वर्ततां वर्तताम् वर्ततां वर्तेतां वर्तन्ते वर्तेतां वर्तन्ताम् Okay. Idanim vartasva वर्तेतां vartetham वर्तेथां vartadvam. वर्तध्वम् Idanim varta वर्ते vadatu. Ai. वर्तावहे वर्तै वर्त वर्तै वर्तावहै तावहै वर्तामहे वर्तामहे Now, what is the sutra which makes it a vruddhi here? It is specific to this particular lakara, lot lakara only. वृद्धिरेचि महोदय No. Also, the vruddhirechi also make a vruddhi, but in this case, atascha iti sutram. आटश्च and वृद्धिरेचि अटागमनम् Atascha iti sutram. वर्तश्च तो आटश्च इति इतश्च सूत्रेण और आतश्च का फर्क क्या है किसमें? इतश्च इतश्च तो मैंने नहीं बोला. नास्ति आटश्च इतस्य न आटश्च आठ वर्तै. वर्त आटश्च से इसकी वृद्धि होती है. तो ओके वर्त अ और ऐ तो ऐ. can you explain the sutram महोदय एकवारं आटश्च क्या बोलता है? आट जो आगम होता है, अचवर्णे उभयोः एक वृद्धि आदेश भवति. तो इसमें आप ऑर्डिनरी भी लेंगे तो आ और ऐ का दोनों मिलन से वृद्धि ही होगी. बट यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया है कि आठ अचि, इधर आठ के बाद में कोई भी स्वर होगा तो पूर्व परयोः एक वृद्धि आदेश भवति. दिस इज स्पेसिफिक. यत्र यत्र आटः आगमः भवति, there is when there is case of atah agamah. If there is no agamah and if you can find any avarna, then you can use vruddhirechi. And when there is an atah agamah, then atasya iti sutrena vruddhi. अस्तु Astu. Vartai वर्तावहे वर्तामहे vartai. महोदय could you please explain Which one? that you are saying that आटश्च. आटश्च इत्यनेन सूत्रेण एव वर्तै भवति but वृद्धिरेचि No, when I was trying to say when there is an agama of ata, then the vruddhi happens only with this sutra. This is a very specific sutra relating to art agama only. Otherwise, if you find any akara or additional akara or akara, then you can have a vruddhi as per vruddhirechi. But in this case, when there is an agama of ata, the vruddhi happens only with this sutra, which is a very specific sutra relating to art agama only. We will have again. We will have in the case of say lang lakara. We have लंग लकार अजादि प्रत्यय आड अजादि नाम सूत्र से आठ का आगम होता है. तो उसमें से भी आटश्च से ही वृद्धि होगी. उसमें वृद्धि रेचि नहीं आएगा. वृद्धि रेचि नहीं लगेगा. When there is an art agamah, the vruddhi happening
is only for atascha iti sutre. Atascha achi pare. So varta vahai, marta mahe, it's okay, we all know. Avahai, amahe. Now, lot. Now, lot we have done lung. Lung, तो इताम अंतो ta, itam, anta, थाः ताः itam, इत्थां इवहिमहि ईवहिमहि ta, itam, anta, thaha, itam, dhvam, ivahimahi. Thaha is basically thas. तास् This is Thas is आं महोदय I have kept तास् as a saukaryartham. So we'll have just add it, but basically it is thas. When it is added to the anga, so we have a varta thas, then the sasajushoru and varta thaha. Okay. Okay, what we were doing, I forgot. थाः लंग लकार Lung lakar. Okay. Ta, itam, anta, varta, लंग लकार में यदोहि हलंत हलादि धातु अस्ति, हलादि अंगम अस्ति तर्हि अट 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 आगमः. सो अवर्त अवर्त is an angam. अवर्त then अवर्तत, then अवर्तताम, अवर्तेताम, sorry, इताम अस्ति खलु, अवर्तेताम, इताम अस्ति, अवर्तन्त हे भगवान, अंत अंत. So अवर्तत, अवर्तेताम, अवर्तन्त, वर्तन्त अवर्त थाः thaha or thas, whatever, because I am specifically marking thas so we can understand padante vidyamanasya sakarasya eva tasajushoruhu ityanena visargah bhavati. Apadante asti ched na bhavati. So that is why we cannot just say if it is thas, we cannot say it is a vruddhi. It has become a made have been as a padam, and now you can make a sasajushoru and ruda rutva and kharavasanayoho visarjaniyah iti sutrena visargah. Avartathaha. Then avartetham, वर्तेथाः itham, ईथां itham, dvam, वर्तध्वं वर्तध्वं dvam. And now वर्ते वर्तावहि वर्तावहि ha, e आवर्त varta, e vahi, वर्ते वर्ता अवर्ता अवर्ते avarte, आवर्तावहि avartavahi, avartamahi. पुनः अतो दीर्घो यही अवर्तावहि, अवर्तामहि. So this is the way I was expecting your reply. Not just many of you have just sent me the rupas. I don't want rupas. I want the prakriya, which is my main goal. I am here to teach you the prakriya, not the rupas. You know the rupas. I know that. So now the dhatu was, next dhatu was, okay, G, Hri. Okay, Hri. हरति एक निमिषं कुत्र अस्ति. Okay, let us forget about this. Hriya. So this is basically a Hriya. What does it signify? Hriya dhatu asti. नकार उभयपदी उभयपद कथम केन सूत्रेण? केन सूत्रेण? स्वरितंकित कर्तृभिप्राये क्रियाफले. त्वरितञ्च कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रेण
किं भवति उभयपदी रूपाणि उभयपदी। उभयपदानि पदानि प्राप्नोति। तो उभयपदी। एक निमिषम्। महोदय हाँ वदतु भगिनि। बट् सङ्केतं किमस्ति उभयपदी स्वरितङ्गिता अनुदाते तत्र कुत्रापि सङ्केतं नास्ति किल? मया न लिखितं ह्री हरणे इति धातु अस्ति परन्तु मूल धातु अस्ति ह्रिय ह्रिय हरणे ह्रिय। This is that is why I have added nyakara here. We have done that in our classes, so I didn't specify yes. that. That I know. ह्रिय Hriyam हरणे. harane. So ubhayapadi. That is the what svarita ita svarita यस्य स्वर स्वरित अस्ति यस्य इत संज्ञा जाता. So in that case when we are doing an it संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक इति सूत्रेण वयम अनुनासिक अचः इत संज्ञा कृतः. But that acha what कीदृशः अचः आसीत्? If it is an anudatta, then it will have a atmanepadi pratyaya. Anudatta. So if it is a swarita, how can we know? How can we? That it will get in the dhatu patha, mool dhatu patha. Okay. So this is a here because I just wrote nyakaradi, so it's a swarita it prasti khalu. Atra nyakaratse it sanya asti chet it dhatu. तो स्वरित इत कर्तृभिप्राये क्रियाफले उभयपदी भवति. तत् अहं जानामि. So that's both the parasmaipadi rupam and the atmanepadi rupam. So parasmaipadi rupam kartari shap vikarana pratyaya ti pratyaya asti sarvadhatuka. Now I will give just for my bhagini I just give one example. Do dupjash. Dupjash. Dupachash. I have to. चौपर चंद्रबिंब. अब ये यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये स्वरित है. हाँ. स्वरित का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा था. ठीक है. दंडी है ना चकार के. हाँ लेकिन उसको मैंने मार्क नहीं समझ में आ रहा कौन सा. वर्टिकल लाइन. ठीक है. तो ये चकार के ऊपर साथ में जो अकार अनुनासिक है वो स्वरित है. तो डू की संज्ञा कौन से सूत्र से हुई? आदिर्नि टुडव. आदिर्नि टुडव से. शकार की संज्ञा हुई हलन्त्यम्. पच इति अवशिष्यते. पच इत्यस्मात् य अनुनासिक अकार अस्ति अयम अकारः स्वरित अस्ति. And which is a marker because it is not a it dhatu but this is a swarit dhatu. And accordingly it will get pachati and pachate ubhayapadi dhatu. Ubhayapadi pratyaya. Okay. I will find out how to write a swarit here, but I will show it to you. So hriya harane. So after doing the dhatu sanya and it sanya, we are coming about the hri. Everyone knows about this. We have done in the class. So shall I go ahead? Adhivam rikara. I will complete with the anga karyam. Okay. So, hakara rikara. Hri it will read. Okay. Then shap adhikam ti. Shap. Akara adhikam ti. Not only ti but te. T plus T and K. Okay. Now after shap goes akara eva tishtete. Hri plus a plus T and te. Now shapa will do harati. Rikarasya Now you understand this is an igantanga. Yes. Apart from that, we previously do the dhatus which were
another we have to see the upda. Updayam hrasva ikah asti pugadda laghupadasya cha. But this sutra, this dhatu is an iganta dhatu, right? So it is an sarva dhatu ardha dhatu kayoho iti sutrena गुणसंज्ञा भवति, गुणादेशः भवति. हरति So हर plus हरति plus हरति हरते and te. So hara is an anga. Now ti te tem tam tam whatever you do, you can add it up. मुझे नहीं समझा ये रुकार का हर रुकार क्यों नहीं? ऋकार कहाँ पर है? ह और र है ना? ये देखिए हर कैसे लिखा जाता है? हर है हाँ और रे है ऐसे. हाँ हाँ हाँ. तो ये ऋकार किस में आता है? इक में आता है क्या? नहीं भगिनी, अरे इगंत इक वर्ण तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कौन सा अंग हुआ? ये इगंत हुआ ना. हाँ. तो इगंत अंग को कौन से सूत्र से गुणादेश होता है? सार्वधातुक अर्ध धातुक हो, ये सूत्र से गुणादेश होता है. सो दोनों को कंबाइन करके हम लोग ने हर किया और हर. अब ती अंते लगाई हरती हरते. कुत्र आत्मनेपदी प्रत्ययानां प्रयोगः भवति, कुत्र परस्मै प्रत्ययानां प्रयोगः भवति? स्वयं कृते स्वयं कृते न स्वस्य कृते. When you are using a कृते, it is always आत्मनेपदी. Another परस्य कृते केवलं परस्य कृते न तस्मिन् स्वस्य कृते अपि आगच्छति. So if like you are cooking for everyone in the house, you will also be eating, right? So you will also cook for yourself also. Sarvasya krite. Sarvasya krite. This is applicable only in case of an ubhayapadi dhatu. Mind that, okay? That parasmaipadi and atmanepadi for karta kartu kriyayaha phalam kutra gacchati kartuhu prapnoti vanya prapnoti. That happens only in case of a ubhayapadi dhatu. In case of an atmanepadi dhatu, if a pure atmanepadi dhatu and pure parasmaipadi dhatu, it doesn't happen. It is just the rupa is there. But when we are using a ubhayapadi dhatu, we should keep this in mind where to use parasmaipadi rupam and where to use atmanepadi rupam. If Maithili Bhagini wants to cook herself a Maggi, no one is around, she is finding being very lazy to cook anything. 2 minutes Maggi she makes for herself and eat. In that came aham pache. Okay, aham pachami tatra nagachati. So you are only cooking, you are only eating. Okay. So Hri Harade. Then what was the Rupam? Another one dhatu. Guj or Sru. Let us stay Sru. वदतु. स्वरितनित कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रमस्ति खलु. तत्र कर्तृभिप्राये इत्युक्ते स्वार्थमेव भवति खलु. कर्तायाः फलं कुत्र गच्छति, कः प्राप्नोति? क्रियायाः फलं यदा अहं पाकं करोमि तर्हि मम पाकक्रियायाः फलं के प्राप्नुवन्ति? केवलम् अहं प्राप्नोमि चेत् आत्मनेपदी प्रत्ययः. यदा सर्वे प्राप्नुवन्ति इंक्लूडिंग मी, देन परस्मैपदी प्रत्ययः. तत्र अर्थद्वयमपि भवति. कर्तृ अभिप्राये क्रियाफले क्रियायाः फलं
कुत्र गच्छति कर्तु यदा कर्तारं गच्छति चेत् आत्मनेपदी अन्यभ्यः गच्छति चेत् परस्मैपदी। सर गुज का अर्थ क्या है? गुज धातु का अर्थ क्या है? देखना पड़ेगा। मुझे मैं समझ नहीं। कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं है। हाँ, गुज शब्द जो हम लोग गुंज करते हैं ना, गुंजन करना है क्या? हाँ, वैसे ही गुंज कर रहे हैं, उसमें हम लोग गुजती करके, उसमें गोजती करके बोल सकते हैं। हाँ, तो हम गोजती, तो ये भ्रमर गुंजन करता है, वही क्या? हाँ, भ्रमर गुंजन। हाँ बस, हाँ, भ्रमरः गोजति। हाँ, ओके, वही मुझे। That means wandering around, is it? No, humming. Oh, गुनगुना करना। हाँ, मकार बोलते हैं तब जैसा होता है ना, करके बोलते हैं ना मकार। हाँ, और कोचती का भी अर्थ पूरा नहीं समझा। कोचती कौन से किसमें कुछ है ना? कुछ अभी इदानीं। हाँ, कोचती का मैंने कब बोला? नहीं, इसमें है ना। नहीं, आपने बोला नहीं, आपने जो शब्द दिए है ना हम लोग को, मैंने खाली धातु पकड़ करके दिया। कुछ शब्द ही है उसमें भी, कुछ शब्द ही, कुछ है ना, तो उसका भी अर्थ अच्छी तरह से नहीं, होगा है ही होगा क्या? मैंने फटफट करके आपको दे दिया था। कुछ शब्द तारे, जिस बोलता अटर और श्रिल क्राई, when you are uttering something very loudly, having like a cry, shrill, so make a bird like sound, chirping. These are different earths of. Okay, and then sru is sakara, rikara, ukara. Sravati. हाँ, sakara, rikara, ukara. So we will do कुत्र गच्छति? सृ कुत्र अस्ति महोदय? सृ वा महोदय? हाँ, स्रवति। सकार ऋकार उकार 8 नंबर। भुवादियो धातवः सृ कर्तृशप्, then वर्तमानेल अनन्तरमेव कर्तरिषप्. This Sravati is basic. You know everyone Sravati, right? Rikara gets us to leak or to go also. हाँ, Sravati. And then so sakara rikara gets that ar adeshah. So Sravati. So everyone understand the ar adesha. श्रु गतो इति धातु। कथम आगच्छति वदति वा? अहं वदामि वा? इक् वर्णः रो प्लस् ऋ प्लस् उ न श्रु प्लस् अ प्लस् ति। नाउ टेल मी। तत्र उकारस्य गुणः भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, बिकास् इट् इस् इक् वर्णः। इगन्ताङ्गम्। स्रो भवति। स्रो अति। पूर्वपरयोः ओकार अस्ति, परे अकारः अस्ति। एचो यवायवः। स्रव plus a plus t, Sravati. Okay. So you have to keep it in mind where igantasya angasya gunadesha bhavati, where upadayah laghuik varnasya gunadesha bhavati. When the anga is an ajanta ending with a swara, you have to first check whether it is an iganta or not.
If it is an iganta, then sarvadhatuk ardhadhatukayoh. If it is a halanta, check the upadha. If there is a laghuik in the upadha, then puganta laghupadasya. If the dhatu is ajanta, nothing happens. Okay? Dhatu is adanta, nothing happens. Mahoday, I have a different doubt, totally different. When I was going through the notes, puganta is there. No, what is the meaning of exactly? There is an agama kasminchit dhatubhya pakarasya agama bhavati. Puk agamaha puganta. Yasmin pakarasya agama bhavati. Pakarah ante asti. Agamaha. Kit agama asti khalu tatra ante eva bhavati. Pugagamaha. Pukaha agamaha. Puganta yasya yasmin pukaha agamaha ante asti. Saha pugantah. Astu. Idanim avagata. And laghu upadasya. For our thing, ours of laghu upadasya is more important. Puganta is not important, but sutra is states, so we have to contasti karaniyam. केचन धातवः सन्ति धा वा ज्ञापयति धापयति इति शृणुमः किल अत्र पुगागमः आगच्छति पुगन्तं महोदय क्षम्यताम् I have to make a move महोदय. No, okay, whoever wants to go, we can just almost we have finished, right? So if you want to do Krusha and Smuru, we can go, otherwise we'll finish. Next class Mahoday, I also want to be there. Okay, in the next class. So we will finish the class today itself. Okay. Anyone has any doubt? You can ask me.